Hello, my dear friends, teachers, and students. Namaste, please. Today is the fourth day of our online Dnyan festival. Friends, this online Dnyan festival is going to prove a turning point in the lives of teachers and students of HSC English from Maharashtra State Board. Friends, in this today's session, we are going to see some of the very important topics of writing skills. And today's session is divided into two sections. The first one will be dealt by and here is the short intro of Mr. Tushar sir. Sanju sir next. Tushar sir works as a junior college teacher at Rashtriya Junior College Chalisgaon, District Jalgaon. He also works as head of the department of his English unit. He has 21 years of experience and known as eminent resource person across Maharashtra. Tushar sir has written two activity books, one for 11th standard and the second one is for 12th standard. And these two activity books are mostly used by all the teachers across Maharashtra. Tushar sir has also known for his blog. He has created blog for 12th English and more than 65 lakh visitors are there of this blog. This is really tremendous achievement of Mr. Tushar sir. He has also created a blog for standard 10th English and the visitors are 3.80 lakh. Really extremely superb work, academic work by Mr. Tushar sir. Apart from that, Tushar sir is known each and every pocket of Maharashtra for creating WhatsApp groups of junior college teachers. He has created 18 WhatsApp groups of junior college teachers and more than 4,500 teachers are there in these groups. And all the issues related education is solved on the same platform. Really wonderful. Tushar sir has also his own YouTube channel, which is known as Learn with Tushar Chavan. Don't forget to subscribe that channel also. Again, Telegram channel of Tushar sir is English Learners Group. So this is what about Tushar sir. Now I would like to introduce the second speaker of today's session, and that one is none but Mrs. Sujata Ali from Dharmapeth MB Dev Science College, Nagpur. She is going to deal with speech, comparing, and review writing. She also works as head in charge of English department of her college. She has completed MA in English literature along with B.Ed, and she has 22 years experience in the field of teaching. She is also known as one of the expert resource person across Maharashtra. She is the recipient of Savitribai Phule Research Award for Excellence in Education for valuable contribution in the field of education presented by Mahatma Phule Talent Research Academy, Nagpur. My dear friends, Sujata Ali ma'am has written many research articles in many national and international journals, and apart from it, she is tying up with foreign universities to innovate English language teaching and learning system. Special interest of Sujata ma'am that she is versatile reader and write, and she writes regular articles in the famous and reputed newspapers. And she has excellent command over English language and communication skills. मला माहित आहे की दोन्हीही आजचे जे स्पीकर्स आहेत ते अत्यंत एमिनंट आहेत आणि जे रायटिंग स्किलचं जे टास्क दिलेलं आहे ते अत्यंत व्यवस्थितपणे ते पार पाडणार आहेत. मी विनंती करतोय सर्व विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना की टू द पॉइंट आणि ऍक्च्युअल तुमच्या ज्या समस्या आहेत त्या समस्या तुम्हाला तुमच्या
चॅटबॉक्समध्ये लिहायच्या आहेत आणि ज्या समस्या तुम्ही चॅटबॉक्समध्ये लिहिणार आहात त्या समस्येला माननीय तुषार सर आणि सुजाता अली मॅम हे समाधान, शंकेचं समाधान त्या ठिकाणी करणार आहेत. जास्तीचा वेळ वाया न घालवता आय रिक्वेस्ट Honorable Tushar Chavan sir to start your lecture. Over to you, Tushar sir. Thanks a lot, Dr. Sanjay Gaikwad sir. You have given me a good chance to deliver lecture by using this Dnyan Mohastav. So thanks to you and all the organizers. Today, I am dealing with the topic writing skill. And in this topic, students are facing many problems nowadays. So it's my attempt to help them to write proper answers in the coming board exam. I will give few guidelines to them, and by using these guidelines, they can write proper answers in a proper way. Let us begin with the first writing skill topic, that is mind mapping. This is compulsory topic. There is no option for this topic, so student have to write answer of this activity. या ऍक्टिव्हिटीसाठी कोणत्याही पद्धतीचं ऑप्शन्स परीक्षेला उपलब्ध नसल्यामुळे उत्तर तुम्हाला लिहायचं आहेच. आणि उत्तर लिहिताना काय काळजी घ्यावी, कशा रीतीने त्याचं उत्तर लिहावं, हे मी आज तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. What is mind mapping? When you hear this word mind mapping, you should have to remember that mind map is a graphical way to represent ideas and concepts. It is a new way to present your ideas, your concept, your thinking. It is the extended part of note making. Secondly, it is a visual thinking tool that helps structuring information, helping you to better analyze, comprehend, synthesize, recall, and regenerate new ideas. All these things can be done by using mind map. Just as in every great idea, its power lies in its simplicity. So when you are writing a mind map, you should have to keep in mind that you should have to make a map which must be simple and easy to understand. ज्यावेळेस माइंड मॅप तुम्ही बनवणार आहात त्यावेळेस या गोष्टी मनामध्ये ठेवायच्या आहेत. In question second C, you will find mind mapping activity. There are 3 marks for this activity. This is the activity statement. Develop a mind mapping frame or design using your ideas, thoughts, concepts to illustrate or develop on the given topic. Now here, no passage will be given, only activity statement will be given. You have to read that statement carefully and write a mind map by using your own ideas. Compulsory topic, no option for it. इस टॉपिक के लिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा. So you have to write answer for this activity. Now see the scheme of marking for mind mapping. 2 marks are for covering all important points. 1 mark is for presentation. Total 3 marks. So you have to keep in mind that you have to make different kind of points to draw mind map frame, and your presentation must be good so that you will get complete 3 marks. Now see the process of writing a mind map. First, determine the main purpose of your mind map and write it down. ज्यावेळेस तुम्हाला माइंड मॅप साठी ऍक्टिव्हिटी दिली जाईल ती नेमकी कशाविषयी आहे हे तुम्ही अगोदर लक्षात घेतलं पाहिजे की त्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये नेमकं काय दिलेलं आहे. Since mind maps starts from the inside and expand outward, your central idea will become the core topic of the diagram.
सेंटर पार्ट पासून आउटसाइड पार्ट पर्यंत तुम्हाला जायचं आहे बाय युझिंग डिफरंट काइंड ऑफ वर्ड्स. Now that you have determined the main purpose of your mind map, add branches that will outline the most basic subtopics. ज्यावेळेस तुम्ही माइंड मॅप लिहिणार आहात त्यावेळेस मुख्य मुद्दा आणि त्याचे उपमुद्दे असं एक शाखा तुम्हाला बनवून दाखवायची आहे. त्यामध्ये मेन पॉइंट आणि त्याचे सब पॉइंट्स हे रिलेव्हंट असले पाहिजेत. The branches should help you to begin organizing the information, use keywords and short phrases to develop the mind map. You should not use sentences in mind map. Use only words, short phrases and develop your mind map. Once you have identified the main subject of your topic, add more shapes until you cover all the valuable information. जब भी आपको पता चलेगा कि मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन टॉपिक क्या है, यू हैव टू ऐड अदर रिलेवेंट वर्ड्स टू दैट मेन टॉपिक and develop the mind mapping frame. Make sure that you continue to organize your information with the most important things closer to the main concept. जोही मुख्य मुद्दा आहे त्याला अनुसरूनच तुमचे सगळे मुद्दे आले पाहिजेत. त्यामध्ये जर गडबड झाली तर मार्क्स जातील आणि गडबड नाही झाली तर आउट ऑफ मार्क्स तुम्हाला मिळू शकतील असा हा टॉपिक आहे. हाऊ शुड माइंड मॅप be written? First thing, draw the main point in the middle. ज्यावेळेस तुम्हाला माइंड मॅप लिहायचा आहे त्यावेळेस मेन पॉइंट हा मध्यभागी लिहायचा आहे. Write its related major point showing relation with the middle point, and after that you have to show the relations of words to the middle point. जो मध्यभागी जो पॉइंट निवडलेला आहे किंवा दिलेला आहे ऍक्टिव्हिटी मध्ये तो दिलेला राहील, तो घेऊन त्याला त्याची माहिती एक्सपांड करणारे जे काही शब्द आहेत ते शोधून तुम्हाला माइंड मॅप हा डेव्हलप करत जायचा आहे. राइट सब पॉइंट्स ऑफ द मेजर पॉइंट्स. व्हेन यू राइट द मेन पॉइंट यू हैव टू ऍड सब पॉइंट्स टू दैट मेन पॉइंट, and in this way the concept can be cleared. Use circles, rectangles, squares or any other shape to write words inside it. Show the relation of words by using lines. Now this is very important thing. You can use circles, rectangles, squares or any other shape to write words in your mind map. Mind map ज्यावेळेस तुम्ही बनवणार आहात त्यावेळेस अनेक प्रकारचे शेप्स वापरता येतील. त्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या इमॅजिनेशनला चालना देण्यासाठी संधी आहे की कशा रीतीने तुम्हाला ती माइंड मॅप डेकोरेट करायची आहे. इट कॅन बी ऑन युअर ओन आयडियाज अँड थिंकिंग. सी डिफरंट काइंड ऑफ शेप्स दॅट यू कॅन यूज व्हेन यू आर ड्रॉइंग माइंड मॅप. माइंड मॅप ज्यावेळेस तुम्ही बनवणार आहात त्यावेळेस या पद्धतीचे कोणतंही डिझाईन तुम्हाला निवडता येईल आणि ज्यामध्ये तुम्हाला शब्द लिहायचे आहेत. You have to write the words inside that design and show the relation in between the middle point by using lines. तर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे डिझाईन आहेत, ते डिझाईनचा वापर तुम्ही करू शकतात आणि त्यामध्ये शब्द लिहायचे आहेत. रेषांच्या सहाय्याने ते शब्द जोडून दाखवायचे आहेत. Now this is the blank design for mind map because there is one mark for presentation. So you should have to show your presentation in a proper way. This is very simple design. ज्यांना काही फारसं डिझाईन बनवण्यामध्ये जर वेळ घालवायचा नसेल तर या पद्धतीने डिझाईन जरी वापरले तरी चालेल. प्रत्येक रेक्टँगल मध्ये तुम्ही वर्ड्स लिहू शकतात. यू कॅन राईट वर्ड्स इन द रेक्टँगल अँड शो द रिलेशन बाय युझिंग द लाईन्स. दिस इज अनदर ब्लँक डिझाईन फॉर माइंड मॅप. हिअर डिफरंट शेप्स आर यूज्ड. In the middle, oval shape is given, rectangle and other shapes are given. You can use arrow also. Line जर नसेल आवडत तर arrow दाखवता येतील आणि या पद्धतीने शब्दांचं एक चित्रण तुम्हाला करायचं आहे, एक डिझाईन बनवायची आहे
की ज्यामध्ये मेन जी कन्सेप्ट आहे ती क्लिअर झाली पाहिजे. यू हॅव टू एक्सप्लेन द मेन कन्सेप्ट बाय युझिंग द सब पॉइंट्स. What should be used to draw mind mapping design? You can use pen. This is the question raised by many students, whether they should use pen or pencil. तुम्हाला पेन वापरायचा आहे का पेन्सिल वापरायची आहे ह्या मनामध्ये प्रश्न येऊ शकतो. माइंड मॅपिंग साठी तुम्ही मोस्टली पेनचा वापर करा. इफ नॉट पॉसिबल यू कॅन यूज पेन्सिल ऑल्सो. जर शक्य नसेलच तर पेन्सिलचाही वापर करता येईल. हे मी का सांगतो की बऱ्याच वेळा जे डिझाईन काढलं जाईल, रेक्टँगल काढलं जाईल, त्यामध्ये जो वर्ड आहे तो जर त्या रेक्टँगलच्या बाहेर जाणारा असेल तर तुम्हाला तो इरेज करून त्याची साईज वाढवता येईल. सो यू कॅन यूज पेन्सिल ऑल्सो. तर पेन्सिलचाही वापर केला तरी चालू शकेल. त्या ठिकाणी काही अडचण मार्कांच्या दृष्टीने होणार नाही. तुमचे मार्क्स रिड्यूस होणार नाही की पेन्सिल वापरली आहे की पेन वापरलेला आहे. बिकॉज दिस इज नॉट द पेपर ऑफ आर्ट और ड्रॉइंग, दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट. तुम्ही जे शब्द दिलेले आहेत त्यांचं रिलेशन व्यवस्थित दाखवलेलं आहे, ते जर व्यवस्थित दाखवलेलं असेल तर तुम्ही पेन्सिल वापरू शकता. फक्त डार्क पेन्सिल वापरा, ब्लॅकच पेन्सिल वापरा. पेन जर वापरायचा असेल तर ब्ल्यू पेन वापरा. नाउ सी few activities on mind mapping. Develop a mind mapping frame or design to show the benefits of games and sports to the students. This is the activity statement. Now here main point is given. What is the main point? Benefits of games and sports. या ठिकाणी मुख्य मुद्दा आपल्याला ऍक्टिव्हिटीच्या स्टेटमेंट मध्ये दिलेला असेल, जो आपल्याला सेंटरला ठेवायचा आहे. त्याच्यापासून इतर जे काही सब पॉइंट्स आहेत ते जोडत जायचे. मेन पॉइंट मिळालेला आहे बेनिफिट्स ऑफ गेम्स अँड स्पोर्ट्स. अँड यू हॅव टू डेव्हलप अ माइंड मॅप फ्रेम बाय युझिंग व्हेरियस वर्ड्स दॅट आर रिलेटेड टू द benefits of games and sports. Now, when you read such kind of statement, you have to start your thinking process. Think about different points. As the topic is related to games and sports and its benefit, you have to think about fitness and stamina, team spirit, sportsmanship, group behavior, killer's instinct, will to win. These are the points. You can think other points also. तर या ठिकाणी जे पॉइंट दिलेले आहेत त्या व्यतिरिक्त दुसरेही पॉइंट तुमच्या डोक्यामध्ये लगेच आले पाहिजेत की गेम्स आणि स्पोर्ट्सचे जे फायदे आहेत त्या संदर्भात आपल्याला लिहायचा आहे. शब्द त्या ठिकाणी शोधायचे आहेत. तर त्या दृष्टीने काय काय आपल्याला शोधता येऊ शकेल त्याचा विचार मनामध्ये येऊ द्यायचा आहे. आणि मग त्या दृष्टीने शब्द आपल्याला मिळाले की आपल्याला माइंड मॅप फ्रेम ही बनवता येऊ शकेल. सी द आन्सर. बेनिफिट्स ऑफ गेम्स अँड स्पोर्ट्स. This is written in the middle, and after that I have added different kind of words there. Main points: team spirit and sportsmanship, fitness and stamina, group behavior, killer's instinct, will to win. Along with these points there are also other sub points are added. मुख्य जो मुद्दा आहे त्याला अनुसरून इतरही काही मुद्दे या ठिकाणी जोडलेले आहेत. आता या ठिकाणी प्रश्न पण येईल तुम्हाला की किती शब्द जोडायचे. जेवढे जास्त तुम्हाला जोडता येईल तेवढे जोडा. देर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर इट. यू कॅन यूज कंप्लीट पेज. बट ॲज देर आर 3 marks, ॲटलिस्ट ॲड 9 वर्ड्स. कमीत कमी 9 शब्द तरी तुम्ही जोडा. 6 शब्द तरी तुम्हाला कमीत कमी जोडावे लागतील. त्यापेक्षा जास्त झालं चांगलंच आहे. 9 नंतर 12 असतील. त्या संख्येवर मार्क्स अवलंबून नाही आहेत, पण त्यातून तुमची क्रिएटिव्हिटी दिसते, तुमची थिंकिंग प्रोसेस दिसते. अँड सो यू शुड हॅव टू ॲड मॅक्झिमम वर्ड्स अँड डेव्हलप दॅट माइंड मॅप फ्रेम. Second activity, write a mind mapping design to show your preparation for the board exam. Now here, what is the main point? Preparation for the board exam. If you see the activity statement, you will definitely find the main point.
मुख्य जो मुद्दा आहे त्याचा प्रश्न स्टेटमेंट मधूनच सुटून जातो. मध्यभागी आपल्याला काय घ्यायचं आहे, प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एक्झाम, HSC बोर्ड एक्झाम हा मेन पॉइंट झालेला आहे. त्याला अनुसरून काही जर पॉइंट तुम्हाला देता येत असतील तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये देऊ शकतात. यू कॅन यूज युअर ओन आयडियाज अँड थिंकिंग. आय विल गिव्ह यू सम टाइम फॉर इट. यूज युअर आयडियाज अँड शो what kind of words you can use there. If you think properly, you will get good words for this topic. It is the preparation for the board exam. बोर्ड एक्झाम साठी प्रिपरेशन करायचं आहे, तर त्या संदर्भात काय काय पॉइंट तुम्हाला देता येऊ शकतील याचा विचार तुम्ही करा आणि सांगा कौन कौन से पॉइंट्स आप यहां ले सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जाम. कैन यू टेल मी? Yes, solving maximum papers. Pathan, Arshia Pathan, given the word. Hard work, yes. Rishikesh Shirsat, reading. Solving maximum papers, yes. Satpute, strategy. Revision, good. Practice, preparing a timetable, yes. This is also one of the main point. Study hard. Self-study, take notes. Means you can write the answer of this activity, though it is a compulsory activity. You can write your own answer here. एवढे तुमचे रिस्पॉन्स येतात ते पाहून माझ्या लक्षात आलेलं की या प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला 100% मिळणार आहे. I have given few points here. Your study schedule, revision, dealing with activity sheets, time management, use of resources, etc. Yes, मोठा फ्लोज झालेला आहे. अनेक विद्यार्थी अनेक प्रकारचे पॉइंट देत आहेत. इट्स गुड. एवढे जर पॉइंट तुम्हाला आले तर तुम्हाला उत्तर सहज येईल. आउट ऑफ मार्क्स तुम्हाला 100% आजच मिळालेले आहेत असं गृहीत धरा. यू हॅव अर्न आउट ऑफ मार्क्स फॉर माइंड मॅपिंग. नाउ सी द आन्सर ऑल्सो. Now here, this is my idea. You can use your own ideas. Preparing a timetable, good reading of textbooks, practice of activities, special attention on writing skill, writing practice, concentration on studies. You have to move away from TV and other entertainment things. Relaxation and peace of mind. This is also one of the important point. Revision. तर या पद्धतीने वेगवेगळे फक्त शब्द जरी तुम्ही शोधून जोडले तरी तुम्हाला त्या ठिकाणी आउट ऑफ मार्क्स मिळू शकतील. यू कॅन अर्न मॅक्झिमम मार्क्स. So it is very easy topic. So don't bother about the word mind mapping. You can write answer of this activity. Just think when you get the activity statement and select proper words. Join these words by using lines or arrows. तर जेवढेही शब्द तुम्हाला मिळालेले असतील ते शब्द तुम्ही जोडायचे आणि या पद्धतीने आन्सर लिहायचं आहे. तुम्हाला आउट ऑफ मार्क 100% मिळतील. Yes, there are many other points also given by many students. Thanks for this response. Third point is draw mind mapping design on sources of entertainment. Now tell me which points can be included if this activity is given to you. Tell me in the chat box. Sources of entertainment. Can you tell me which points can be taken to write a mind mapping design? सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए कौन कौन से पॉइंट्स आप सजेस्ट कर सकते हो? यस, स्पोर्ट्स, टीवी, यस, मोबाइल. बहुत सारे बच्चे टीवी बोल रहे हैं. और भी एंटरटेनमेंट थिंग्स आप सोच सकते हैं.
Sports, yes, good. Social media, Satpute. Reading comics, yes, it is also one of the media of entertainment. Mobile, music, games, yes, good. Singing, it is also one of the important point. Films, WhatsApp is the major source of entertainment for all. Magazine, yes. Group discuss, yes, it is also a kind of entertainment. Tremendous response, thanks to all of the participants. Now I have given few points for your thinking. You have also added these points. Okay. There are so many points, so you can write answer properly in the board exam. Okay, now see the answer. I have written main point in the middle, then sub points in oval, and after that other points are added there. You can use any kind of design by using your own ideas and thinking. You can use pen or pencil, there is no problem for it, and write maximum words, then you will get good marks. ज्यादा तो कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ वर्ड्स लिखने हैं, तो जितने ज्यादा हो सकते हैं आप लिखो. Yes, there are many other points, friends and family, newspaper, which I didn't added here, but you can add them also. पूर्ण पेज तुम्ही वापरा. You can use the complete page for writing the answer of this activity. You can't write half answer in one page and half answer in another page. पूर्ण पेजचा तुम्ही वापर करायचा आहे. जागा उरली असेल तर सोडून द्या, पुढच्या पेजवर जा, तिथं ते लिहा, नवीन पेजवर लिहा, अगोदरच्या पेजवरची जागा आहे तिथे एक रेष मारून ठेवा आणि कंप्लीट पूर्ण पेजचा जर वापर केला तर तुमचं उत्तर चांगलं येईल. You can write a good answer for this activity. Now another activity is given here. Develop a mind map frame designed to show the development in your personality seen within yourself in the last 2 years. When you enter standard 11th and now you are in standard 12th, you can see different kind of changes in your behavior, in your personality. So you can write these changes by using words. जो changes आप अपने personality में देखते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं. Can you suggest me few words? Fluent speaking, yes. Music. Speaking, yes. Speaking, communication. Neha Rathod, time management, good. Courtesy, manners, yes. You have learned this. Speaking with people. Thinking process, you have developed your thinking process. Physical changes, yes. Smart, yes. अब तो सभी smart बन गए अभी 2 साल में. If you see the photograph of standard 10th and recent photograph, you will definitely find changes in your personality. Yes, there are so many words which you have suggested, so you can write the answer of this activity also. I have also given few points here. You can add your own points. Self-awareness, communication skills, social awareness, maturity level, yes. Okay. Now try to find answers of many such activities. Without practice, you can't get good marks. So try to find many such activities and write answers of these activities. You will get good marks in the board exam.
Now our first session is over. Let us begin with second writing skill topic. Expansion of idea. Question number 4. See, here you will get expansion of idea. Now, this is the topic which you may learn in standard 10th. But here it is also included to show your ability to expand the ideas, proverbs, or concepts. There are few options for this activity. Before writing the expansion idea, you should have to remember few things. First, understand the meaning of the idea, proverb, or concept. When you get the activity, it is your duty to understand the meaning of that proverb which you want to expand. Generally, proverb दिली जाते ती तुम्हाला एक्सपांड करायची आहे. तिचा अर्थ तुम्हाला जर समजला तर ते एक्सपांड करणं तुम्हाला सहज सोपं जाईल. Second thing, associate extra points. When you get the concept, idea, or proverb, you have to collect points to develop it. See through different angle, try to get various approaches. जी प्रोहर्ब दिलेली असेल तिच्या अर्थाच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या प्रकारच्या दृष्टीने काय तिचा अर्थ निघू शकतो याचाही विचार करा. Think of most related examples and instances. You can write examples which can explain the concept, the idea, or the proverb. आणि जी काही कन्सेप्ट आहे ती स्पष्ट करण्यासाठी काही उदाहरणं पण तुम्ही द्या. Explore any amazing story suitable to the idea if possible. You can add short story to explain this concept. एखादी छोटीशी कथा त्या ठिकाणी जर तुम्हाला येत असेल, प्रसंग येत असेल तर तोही तुम्ही त्या ठिकाणी लिहू शकतात. See the process of writing expansion of idea. First, explain the concept initially. You have to explain the concept in the first paragraph. पहिला जो पॅराग्राफ आहे त्यामध्ये जी आयडिया दिलेली असेल, कन्सेप्ट असेल, प्रोव्हर्ब असेल ती तुम्ही स्पष्ट करून सांगायची, तिचा अर्थ सांगायचा. Give examples to explain the concept. Then you have to add a few examples that can explain the idea or the concept. Finally, you have to write the moral from the which you get from that concept or idea. आणि त्या कन्सेप्ट मधून काही शिकायला मिळालं असेल तर त्याचा उल्लेख तुम्हाला करायचा आहे. See the scheme of marking. Proper expansion of idea 2 marks, proper introduction 1 mark, conclusion 1 mark. तर ज्या पद्धतीने मी अगोदर सांगितलं स्कीम ऑफ मार्किंग त्याच पद्धतीने आहे. You have to expand the idea. You have to properly show the concept in your introduction, and after that you have to find out the conclusion. See few examples. Expand the following idea in about 100 to 150 words with the help of the points given below. A activity statement आपको मिलेगा. You have to read it properly. After that there will be one proverb. All is well that ends well. Now this activity is taken from the September 2021 board exam. रिसेंटली ही परीक्षा झालेली आहे मागच्या वर्षी. त्यामध्ये ही ऍक्टिव्हिटी विचारलेली होती. ऑल इज वेल दॅट एंड्स वेल. फ्यू हिंट पॉइंट्स विल बी गिवन. Well begun is just half done. It's all about the finishing touch. Patience and perseverance are always counted.
Happy ending leads to satisfaction. In your exam also you will get few hint points. तुमच्याही परीक्षेमध्ये तुम्हाला काही मुद्दे मिळतील की त्या मुद्द्यांचा उपयोग करून तुम्हाला आन्सर लिहायचं आहे. Now, when you get the activity statement and proverb or concept or idea, you have to think on these 4 points. Here, all is well that ends well. ही concept दिलेली आहे. You have to find out its meaning. After that, you have to give examples to explain it. You have to show the importance of that proverb. And finally, we have to give your opinion about that idea or concept. ही जी काही संकल्पना दिलेली आहे तिच्या बद्दल ज्यावेळेस तुम्ही लिहिणार आहात त्यावेळेस या 4 पॉइंटचा उपयोग करायचा आहे. Can anyone tell me the meaning of this proverb? Tell me in the chat box. All is well that ends well. What is the meaning of this concept? What is the meaning of this idea? Can anyone tell me? All is well that ends well. Yes. Write your opinion in the chat box. All is well that ends well. अंत भला तो सब भला. Yes, Puja, Idia, it's good. Namrata also had given same meaning. Yes, it is the proper meaning. ज्याचा शेवट चांगला त्याचं सर्व चांगलं शेवट गोड तर सगळेच गोड. Yes, सुनील मुळे. Yes, this is the meaning, means you understand the meaning of this proverb. Then you have to write examples, importance, and your opinion about this concept. These are the 4 points, and think about these 4 points when you are writing the answer. Now, no matter how one arrived at a certain outcome, if that outcome is good one, then everything is all right. This is the meaning of that concept in English. बहुत सारे बच्चों ने बताया, हिंदी में बताया, लेकिन हमें आंसर तो इंग्लिश में लिखना है. So you have to think the meaning in English. No matter how many challenges were faced in order to achieve a goal, if that goal has been achieved and is a good one, the whole process is justified. The idea is based on the principle that if a good result is achieved, it does not matter what was done in order to achieve that result. Yes, we can find the meaning of this proverb in such a way. Use different kind of words to explain the concept. Now, you have to write examples to explain the idea. A person passes an exam after plenty of very tiring and long studying. एखादा व्यक्ती भरपूर प्रयत्न करून मेहनतीने एक्झाम पास झालेला आहे. त्याचे कष्ट पावले जात नव्हते, पण ज्यावेळेस तो पास झाला, for him all is well that ends well. Someone marries the love of their life after years of separation and challenges. For such lover, all is well that ends well. Old friends reconcile after an argument, and the preceding argument is forgotten as a result of the reconciliation. Here also, all's well that ends well. One of the robbers had a change of heart and helped the police to catch the culprit. Here also, all's end that ends well. हे 4 उदाहरणं आपण घेतलेली आहेत. You can think different examples of your
ओन थिंकिंग. हेच उदाहरणं लिहिली पाहिजे असं नाही, तुम्ही तुमचे स्वतःचे उदाहरणं तयार करायचे की ज्यातून ही कन्सेप्ट क्लिअर होईल. जी कन्सेप्ट दिलेली असेल त्या संदर्भातले काही एक्झाम्पल्स तुम्ही उत्तरामध्ये लिहायचे आहेत. यू हॅव टू राईट द एक्झाम्पल्स इन युअर आन्सर टू एक्सप्लेन द कन्सेप्ट. If you have any personal experience, you can add it also. I had studied hard during the whole year when I was in 10th standard, but before exam, unfortunately, I faced an accident, so I couldn't concentrate on my study. Despite this, after the exam, when result came, I was a topper in the class, so I felt at that time that all's well that ends well. परीक्षेपूर्वी दुर्दैवाने अपघात झाला, पण वर्षभर तुम्ही अभ्यास केलेला असल्यामुळे परीक्षेच्या कालावधीत जरी तुम्हाला वेळ मिळाला नाही, तुमच्या अपघातामध्ये जखमी झालेले असल्यामुळे, तरी ज्यावेळेस तुम्ही परीक्षा देऊन आलात, रिझल्ट आला, तो तुम्हाला टॉपर बनवून गेला, अशा वेळेस तुम्ही सुद्धा म्हणाल ऑल्स वेल दॅट एंड्स वेल. सो यू कॅन ऍड युअर पर्सनल एक्झाम्पल्स ऑल्सो. देन importance of this proverb. You have to show the importance of that proverb. When you read that proverb, you feel whether it is important or not. The proverb is very good for those times when we need to motivate ourselves to keep going with a difficult task. ही जी काही कन्सेप्ट आहे ती अवघड स्थितीमध्ये ज्यावेळेस आपल्याला जावं लागतं त्यावेळेस आपल्याला मनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, चॅलेंज स्वीकारण्यासाठी मदत करणारी प्रोव्हर्ब आहे. सेकंडली, वी बिकम अ पॉझिटिव्ह थिंकर इफ यू रीड स्टोरीज which can explain all's well that ends well. So this is the importance of this proverb. या म्हणीचं महत्व काय आहे, त्यातून जी संकल्पना निर्माण झाली त्याचे काय फायदे होऊ शकतात तेही तुम्हाला एका पॅराग्राफमध्ये लिहायचं आहे. यू हॅव टू राईट दिस इन वन पॅरा. नाउ आफ्टर दॅट यू हॅव टू राईट युअर ओपिनियन अबाउट दॅट प्रोव्हर्ब, दॅट कन्सेप्ट. Well begun is just half done, but to complete it in happy note is the real win. It's all about the finishing touch which makes us happy. Patience and perseverance are always counted, so be ready for it. Happy ending leads to satisfaction, so make every ending happy. या ठिकाणी तुम्हाला तुमचं मत द्यायचं आहे की ती जी काही म्हण आहे त्या म्हणीचे नेमके फायदे काय होऊ शकतात, ती म्हण उपयुक्त आहे की नाहीये की चुकीची आहे. जर तुम्हाला असं वाटलं ती म्हण चुकीची आहे तर यू कॅन राईट इन दॅट वे ऑल्सो. जर म्हण तुम्हाला आवडली नसेल तर तसंही तुम्ही म्हणू शकतात. या ठिकाणी तुमच्या इमॅजिनेशनला, तुमच्या रिझनिंग पॉवरला आणि तुमच्या थिंकिंगला महत्व आहे. सो यू कॅन राईट युअर ओन आयडिया, ओन ओपिनियन अबाउट दॅट कन्सेप्ट. So in this way, you can write the answer of the expansion of idea. Now this is the complete answer. First paragraph, here you have to explain, you have to give the meaning of that concept. Second paragraph, here you have to give few examples. Third paragraph, here you can give your personal experience. पण जर तसा काय अनुभव तुम्हाला आलेला नसेल आणि द्यायचा नसेल तर तुम्ही ते टाळू शकतात. यू कॅन स्किप धिस पॅराग्राफ. या कन्सेप्टचं जे महत्व आहे, उपयुक्तता आहे, ती तुम्हाला द्यायची आहे. इन द फोर्थ पॅराग्राफ यू हॅव टू राईट अबाउट इट. Fifth para, you have to give your opinion. So in the board exam, you can write the answer in 4 paragraph. You can skip one para. Remember, write answer at least in 4 paragraphs. Word limit 100 to 150 words approximately.
and use simple language, easy language. जर शक्य झालं तर 4 पॅराग्राफ कराच, नसेल तर 3 जरी झाले तरी चालतील. शब्द मर्यादेला महत्व आहे, पॅराग्राफला तेवढं महत्व नाहीये. पॅराग्राफ यासाठी मी सांगितलंय की आपले जे 4 पॉइंट्स आहेत ते त्या ठिकाणी कव्हर होऊ शकतात प्रत्येक पॅराग्राफ मध्ये, आणि म्हणून तशी पॅराग्राफ सेपरेट केले तर चांगलंच. वर्ड लिमिट जी आहे ती मेंटेन करायची, 100 to 150 वर्ड्स अप्रॉक्सिमेट आहे, टेंटेटिव्ह आहे, थोडंफार इकडे तिकडे चालू शकतं. अँड यूज सिम्पल लँग्वेज टू एक्सप्लेन द concept, to expand the idea. These are the few examples for your self practice. After the session, you have to write answers of these activities. हे जे काही ऍक्टिव्हिटीज दिलेले आहेत एक्सपान्शन ऑफ आयडिया साठी, आपलं सेशन संपल्यानंतर तुम्ही घरी प्रॅक्टिस करा. ज्या पद्धतीने मी 4 पॉइंट दिले तसं लिहिण्याचा प्रयत्न करा. अजून तुमच्या काही वेगळे आयडिया असतील, यू कॅन यूज इट. You will get various examples in my blog juniorcollegeteacher.blogspot.com. Now, next writing skill is appeal writing. You will find this writing skill in question number 4th D in your board activity sheet. Appeal writing is one of the easiest topic as well as challenging topic also. Many students can write appeal, but if you use specific format, you will get good marks. So I will give you few guidelines for writing the appeal. See the scheme of marking: presentation of content, convincing language, inspiring and motivational message. All these give you 4 marks. Now, first thing, write in full sentences and in shorter paragraphs. When you are writing appeal, use full sentences. You can use informal language also. You can use bullet point to set out key points and information. ज्यावेळेस तुम्हाला मुद्दे द्यायचे असतील तर बुलेट पॉइंट्स घ्या, क्रमांक द्या किंवा एरो दाखवा, एकाखाली एक मुद्दे द्यायचे, तर त्या पद्धतीने त्याचाही वापर तुम्हाला करता येईल. मेक शुअर यू हॅव एक्सप्लेन ईच पॉइंट फुल्ली. प्रत्येक पॉइंट हा तिथं स्पष्ट झाला आहे याचा विचार करा. मेक शुअर यू इन्क्लूड लॉट्स ऑफ फॅक्ट्स अबाउट द टॉपिक. यूज द हिंट्स गिवन इन द activity. Here also in the board exam, few hints will be given. You have to use that hints when you are writing the answer. Now see one format for appeal writing. First thing, you have to give title to your appeal. टायटल तुम्हाला द्यावं लागेल, शीर्षक द्यावं लागेल. त्या टायटलचा वापर करूनच तुम्हाला सुरुवात करायची आहे. गिव प्रॉपर टायटल टू युअर अपील ॲज पर द सब्जेक्ट ऑफ युअर अपील और पर्पज ऑफ युअर अपील. जे अपील तुम्ही निवडलेलं आहे किंवा तुम्हाला आलेलं आहे परीक्षेला, त्याचा उद्देश काय आहे आणि त्यातून तुम्हाला नेमकं काय लोकांना आवाहन करायचं आहे, त्या संदर्भात ते टायटल असलं पाहिजे. यूज अट्रॅक्टिव्ह स्लोगन्स. These slogans catch the attention of the readers. Use good language so that people can attract. Tell about the need of the cause. These are the 4 points that you can include in your appeal. Add some of your own ideas. Give contact details. By using these points, you can properly write appeal. Now see one example, appeal for flood relief fund. Hint points will be given in the activity sheet. You have to read them properly. Now you have to write appeal for flood relief fund. So think about the title.
क्या टाइटल दे सकते हो आप? फ्लड रिलीफ फंड. Can anyone suggest me? Tell me in the chat box. If you have to appeal people for donating something for flood affected people, what will be the title? काय टायटल येऊ शकतं? Donate for flood affected brothers. Donate for Sangli. You can add any place here. Donate your friends. Donate for a pious work. Show your generous nature. So these are the different kind of titles which I suggest you. You can use your own title. Think about slogans. When you are writing appeal, you have to write few slogans there. Each one help one. This is very famous, popular slogan. Donate money, help many. Extend a helping hand, give hope. Yes, donation for flood. Dinesh said this in the chat box. Donate to make morning meaningful. Let them feel your good soul. So these are the slogans. You can use any one slogan or any two slogan for writing the appeal. Now these are the words, appealing words, persuasive words that you should have to use when you are writing the appeal. तर या पद्धतीने लोकांच्या भावनेला आवाहन करणारे शब्द वापरून तुम्हाला अपील लिहायचं असतं की ज्या योग्य लोक तुमच्या आव्हानाला प्रतिसाद देतील. यस, पूरग्रस्तांसाठी मदत. Then need of appeal, why you are making that appeal, you have to give its information in your appeal. काय काय तुम्ही करणार आहात त्याविषयी माहिती तुमच्या अपील मधून तुम्हाला देणं आवश्यक आहे. Then contact details, you can give imaginary contact person and address there. Give venue, date, time if essential. Write address in specific bracket to attract the readers. ज्यावेळेस ऍड्रेस तुम्ही देणार आहात विशिष्ट असं एखाद्या चौकटीमध्ये त्याला घ्या. Now see the answer. We don't have much time, so I'm showing you directly the answer. Now in this way you can use a specific frame to decorate your appeal. तर या पद्धतीने एक सर्कल काढून खाली रेक्टँगल काढलेला आहे, मध्ये काही चित्र जर तुम्हाला येत असतील तर अवश्य काढा आणि त्यामध्ये सगळी माहिती भरण्याचा प्रयत्न करा. इथं दिसावं चांगलं म्हणून मी अलग अलग कलर वापरलेले आहेत. You should not use different kind of colors here. Use same ink to write the appeal. See more examples. Appeal for blood donation camp. Same points. In this way, you can write appeal in rectangle also. You can add pictures there. काही पिक्चर्स तुम्ही ऍड करू शकतात. कॉन्टॅक्ट डिटेल खाली चौकटीमध्ये द्या. तीच अपील वेगळ्या पद्धतीने दिलेली आहे. यू कॅन राईट इन सच वे ऑल्सो. आय डोनेशन. Here you can use different shape. You can give the picture of eyes. So in this way you can write appeal. तर बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना सोपा जाणार हा टॉपिक आहे. तर या टॉपिकचे उत्तर देण्यासाठी प्रयत्न करा. This is for your home assignment, bad effects of smoking. You can try to find the answer. Now
we have to see the last writing skill topic, blog writing. Question number 4th D. How to write a blog? It is also a skill. See the scheme of marking. Main content 2 marks, header, menu, navigation bar 1 mark, footer 1 mark. Blog writing is a skill. I am a blogger, so I know how hard it is. These are the guidelines. When you are writing a blog post, you should have to remember these guidelines. Blog must be written in a specific template. This is the main point. स्पेसिफिक टेम्पलेट मध्येच ब्लॉग हा लिहिला गेला पाहिजे, त्यामध्ये हेडर आणि फुटर असेल. जर तुम्ही टेम्पलेट वापरली नाही तर तो ब्लॉग राहणार नाही, तो एसे होऊन जाईल. and there is no essay in our syllabus. Now see the actual blog post template. ही माझ्या ब्लॉग ची एक टेम्पलेट आहे, but you can't write such template, or you can't use such template in the board exam. It is very hard. Actual जी ब्लॉग ची टेम्पलेट आहे ती तुम्हाला परीक्षेला लिहिणं जरा अवघड आहे, म्हणून मी एक सोपी टेम्पलेट तुम्हाला दाखवणार आहे. You can see one actual blog. Yes, this is the blog which I have created. Here the middle part is the blog post. In the middle part you have to write the answer. Now this blog is very decorative blog, so you should not consider it as your model. Just concentrate on the middle part. मधला जो पोर्शन आहे तो तुमच्यासाठी आहे. आजूबाजूला जे डेकोरेशन मी केलेलं आहे ते माझ्या वेबसाईटच्या सौंदर्याचे वाढवण्यासाठी मी ते केलेलं आहे. परीक्षेला तसं तुम्हाला करायची आवश्यकता नाही. फक्त तुम्हाला हेडर या ठिकाणी द्यायचं आहे, त्यानंतर मधला पोर्शन आहे, खाली फुटर आहे. ब्लॉग व्हिजिटर्स या ठिकाणी मी दिलेलं आहे 65,90,204. So this is the actual blog. Why blog is given in your syllabus? Because blog is also one of the best career opportunity for you. If you become a blogger, you can reach to many persons at one time. Now this is the simple blog post template for your board exam. Here I have given few words which are important. They are included in header as well as few words are included in the footer. तर या पद्धतीने रेक्टँगल डिझाईन जर तुम्ही बनवली, पेन्सिलचा वापर करा किंवा पेनचा वापर करा, आणि त्यामध्ये मधल्या पोर्शन मध्ये तुम्ही जर उत्तर लिहिलं तर ते उत्तर जास्त परफेक्ट होईल. जर तुम्ही हे शब्द वापरले नाही, www.blogger.com, पोस्ट टायटल, पब्लिश, प्रिव्ह्यू, सेव्ह, क्लोज, तर ते ब्लॉग वाटणार नाही. जर तुम्ही निव्वळ मधलं लिखाण केलं एका चौकटीमध्ये तर तो एसे वाटेल. म्हणून तुम्ही ह्या टेम्पलेटचा वापर जर केला तर खूप चांगलं होईल. So these are the words which you can use in your header, menu or navigation bar. It is not compulsory that you have to use all the words, but use maximum words in your header. यातले जास्तीत जास्त शब्द तुम्ही हेडर मध्ये वापरा. In footer you can write just comments and date, imaginary date, because these points has marks. You will get marks for footer as well as header.
राईट मेन कंटेंट इन सच बॉक्स. एक रेक्टेंगल काढा, त्यामध्ये मधलं सगळं लिखाण तुम्हाला करायचं आहे ब्लॉग पोस्टचं. येस, आय विल शो वन एक्झाम्पल. कोणीतरी चॅटमध्ये म्हटलं एक्झाम्पल दाखवा. Save environment. You have to write a blog post on save environment. Hint points will be given. You have to write in 100 to 150 words. So this is the actual answer. या पद्धतीने ते दिसेल तुमचं लिखाण. प्रयत्न करा या पद्धतीने लिहिण्याचा. जे वर्ड्स आहेत ते तसे वापरा. त्यातले काही शब्द तुम्हाला नाही आठवले तरी चालेल, पण काही ना काही शब्द मात्र आले पाहिजेत. ब्लॉगर, कंपोज, HTML, पब्लिश, सेव्ह, प्रिव्ह्यू, क्लोज. Second example, based on yoga practice for better living. I am showing you direct example. In footer, you have to write just date and comments. These two words. You can add imaginary date there. So in this way, you can write a blog post. You can add pictures also there, if possible. Draw pictures there. It is not compulsory to draw pictures, but if possible, you can draw it. You can visit my blog juniorcollegeteacher.blogspot.com. You will get PDF of such examples. You can also you will also get various examples there. You can also use my YouTube channel to get more information. Thanks for your active participation. I tried my level best to guide you. Now here, I have to stop now because another speaker is waiting. I request Professor Sujata Ali ma'am to continue your session of writing skill, because you are a good speaker, good English speaker. Hearing English through you is a enjoyment for all. Thank you, sir. So just start your session. I request you. Yes, sir. Thank you very much. A very warm good evening, my wonderful students. And I also initially, at the beginning, at the onset, I wish to thank the Dnyan Mohastav online orientation session that has been taken by all these great organizers. I thank you all. And without much ado, since we are already having less time, I am going to begin with today's session. Let me just share my screen with you. Just give me a moment, please. Is my screen visible? Oh, yes. Is my screen visible yes, to all? Absolutely visible. Visible. Okay. You are audible and visible. All right. Thank you very much, sir. Just a second. I'm trying to cover the entire screen. Just 1 second, sir. Go to slideshow. Okay. And beginning, from beginning. Start your slide from beginning. Slideshow from beginning. Yes, okay. Click on it. Okay, now I have started my slideshow. A very warm good evening, my wonderful enthusiastic students. मैंने बहुत एंजॉय किया आप लोगों के चैट साइमल्टेनियसली पढ़ रही हूं मैं
and I am seeing that you all are a very active lot, okay, very proactive indeed. And I hope you will really enjoy and understand and learn from the session that I will be taking today. I will also be dealing with writing skills. Now, हम जब writing skills की बात करते हैं, okay, we want to see what exactly are these skills. Skills जो हो रहे हैं, जो होते हैं, in fact, it is something that needs to be developed. Just as हम लोग dancing skills सीखते हैं, musical skills सीखते हैं, गाना सीखते हैं, ये सब चीजें हम लोग एक दिन में नहीं सीख सकते. It takes us some amount of time and effort on the part of every individual if you want to master that particular skill. In the same way, when you are dealing with writing skills, keep in mind, students, overnight हम लोग ये writing skills नहीं सीख सकते हैं. Tonight you go to sleep thinking, okay, from tomorrow I am going to master this skill. Trust me, it's not going to happen. ऐसे नहीं होता है. जितनी भी writing skills तुमको तुम्हारी क्वेश्चन पेपर पे दी गई है, जिसको हम अभी एक्टिविटी शीट बोलते हैं, all these skills have been added in the syllabus, keeping in mind the purpose that these skills are going to be beneficial for you. ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होंगी throughout your life. ये writing skills हम जो सीख रहे हैं, ये मोटिव से मत सीखिए, so that you only need to answer certain questions in the question paper, and after that तुमने totally भूल गए. This is not the way in which you are supposed to study. जब हम कोई चीज सीखते हैं, it is to be learned in such a manner that it remains with you throughout your life. So हम जो teachers हैं, जो यहाँ आए हुए हैं, यही intention से आए हैं. Right now, definitely, it is for helping you to be able to solve your paper in a better manner so that you score better marks. Okay, but keep in mind, when you are learning anything, it can be the English language, as we all are English teachers here, we will focus on that. Okay, you have to learn English from this perspective that it is going to help you throughout your life. और ये जो skills है, जब तुम कॉलेज पास करके व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, तुम रियलाइज करोगे ये छोटे छोटे स्किल्स जो हम तुमको यहाँ पर पढ़ाए हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, तुम्हारे को लाइफ लॉन्ग ये चीजें यूज करने को मिलेगी. एंड देन व्हेन यू आर बेनिफिटेड, यू विल रिमेंबर योर टीचर्स. ओके, चवान सर थे जिन्होंने हमको ब्लॉग राइटिंग सिखाया था, या जिन्होंने हमको अपील कैसे लिखना है वो सिखाया था, या जिन्होंने हमको आइडियाज को एक्सपैंड करके कैसे एक्सप्लेन करना है ये सिखाया था. ओके, सो इवन टुडे व्हेन आई विल बी डीलिंग विथ योर स्पीच राइटिंग, with your comparing, as well as film review or book review. All are very interesting topics, very extensive as well. But trust me, ये मत सोचो कि हम 4 out of 4 marks नहीं score कर सकते हैं. Trust me students, where there is a will, there is a way. और अगर तुमने ठान लिया कि हम 4 में से 4 marks लाएंगे ही, तो एटलीस्ट तुमको 4 out of 4 ना मिले, बट 3.5 तो मिल सकते. सो ऑलवेज जो अपना लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है, जो तुम्हारी उड़ान है, उसको ऊंची रखो, so that if not till there, at least you will reach till here. Okay, that is how you have to prepare for every examination. And I would prefer if all the students took these orientation classes a little bit seriously, rather than just having casual discussions and talks in these chats. ये chat तुमको तुम्हारे benefit के लिए, तुमको help करने के लिए दिया गया है, not to have personal conversation with your friends. वो तुम जरूर करो, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, but you need to do that on your
personal chats. Okay, this is a chat which is public, so everybody can read what you are reading, including all the teachers present here as well as all the teachers of your colleges. Okay, so ये decorum थोड़ा सा students अपने ऊपर काबू रख के maintain करने की कोशिश करो. Okay, I'll move forward. Writing skills, I told you. I will be dealing with speech writing. This is a question C activity based में जो रहता है. C के जो 2 activity, every activity में तुमको 3 choices दिए जाएंगे. You have 3 choices given in every question. And out of these 3 choices, you need to prepare only, you have to attempt only one. So I advise my students, तुम वो एक particular activity अच्छे से prepare करो, जिसके ऊपर तुमको confidence है, and you are sure कि when this question will come in the paper, 100% मैं इसके ऊपर अच्छे से आंसर अटेम्प्ट कर सकता हूं. इसलिए डोंट डाइवर्सिफाई योर माइंड. बहुत ज्यादा चीजें, बिकॉज वी आर ऑलरेडी एट द लास्ट फेज, इस टाइम पे हमको न्यू चीजें सीखने के लिए ज्यादा वक्त नहीं रहा है. एंड वी ऑल नो दैट द एंटायर ईयर ऑफ आवर्स we kept on moving from online mode to offline mode, then online, then offline. Students have been very much disturbed. Okay, so keeping all this in mind, also the board has given you an extra half an hour for solving your paper. 3 घंटे हमको ऐसे लग रहा होगा right now that it is a lot of time, but trust me, जब तुम इंग्लिश पेपर लिखने स्टार्ट करोगे, तुमको पता नहीं चलेगा कि ये 3 घंटा हमारा कैसे खत्म हो गया है. इसलिए जो हाफ एन आवर एक्स्ट्रा दिया गया है उसका तुमने डेफिनेटली बेनिफिट लीजिए, उसका फायदा उठाइए. ओके, नाउ स्पीच, कमिंग टू स्पीच राइटिंग. ओके, दिस क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स. ऑलराइट, चॉइसेस दिए रहेंगे, उसमें से अगर तुम स्पीच राइटिंग अटेम्प्ट करते हो, सो व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट स्पीचेस. स्पीचेस आजकल एक कॉमन ट्रेंड हो गया है, एक फैशन हो गया है. अकॉर्डिंग टू मी, everybody wants to be very effective and convincing in giving speeches. कोई भी टीवी चैनल हम खोलते हैं तो हम देखते हैं हर पॉलिटिशियन, हर लीडर अपनी तरीके से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है to be like him, isn't it? To do what he says. He feels what he is saying is right. Another trend you see, students, आजकल student leaders भी ample तुमको देखने को मिलेंगे, है ना? हर यूनिवर्सिटी में you will find student leaders trying to give a lot of speeches. Our principals, educators, the best man in the wedding, बहुत सारे लोग speech देना पसंद करते हैं. No doubt, you require to be extremely skillful when you need to give speeches. क्योंकि ये speeches जब हम सुनते हैं, इससे हम काफी मोटिवेट होते हैं. ओके, हम इंस्पायर भी होते हैं. कभी हमको कोई टीचर्स की बात इतनी छू जाती है कि हम उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं. उन्होंने जो रास्ता हमको दिखाया है, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, isn't it? And why we have done all that? Because we found that person's speech very, very impressive. We all want to be very impressive in our speaking skills. On the contrary, speeches can also be very boring. They can also be very dull. So all this depends upon how your speeches are prepared. बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे जो spontaneously extempore में speech दे सकते हैं. Very few people. Generally, जब भी कोई इंसान स्पीच देता है, उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन की जरूरत होती है. यू नीड टू प्रिपेयर वेल इन ऑर्डर टू गिव योर स्पीच. नाउ व्हेन यू आर गिविंग योर स्पीच or preparing for your speech, writing your speech, there are certain objectives that need to be borne in mind. Okay, ये स्पीच में क्या क्या चीजें होना जरूरी है. तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है, जो तुम सोचते हो, जो तुम एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, what are your views, what is your knowledge about that particular subject, all these things have to be included in your speech. If you are very talented and skilled, then trust me, this technique of delivering a speech will help you to build your confidence, and it will also help in grooming
your overall personality. But right now we are not going to go into that detail because अभी तुमको एग्जाम्स में फोकस करना है और ये देखना है हम स्पीच किस तरीके से अच्छा लिखे जिससे कि जो हमारा वैल्यूअर है वो इमीडिएटली हमको 4 में से 4 दे दे. 4 out of 4 मिलना I won't say is impossible, but it is difficult task. बहुत सारी चीजें उसमें हमको कवर करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें का ध्यान रखना पड़ता है. एंड सिंस इंग्लिश इज योर फर्स्ट पेपर, तुम लोग बहुत नर्वस भी होते हो. So I feel if you are well prepared for your paper, you don't have to be nervous. Okay. Now, coming down, certain points that need to be remembered while writing your speech. Length of the speech क्या होना चाहिए? Length of the speech should not exceed 100 to 150 words. When I am saying 100 to 150 words, you need not sit and count the words. Okay. वहां पर हम words बैठ के count नहीं लगा रहे. मैडम ने तो अली मैडम ने बोला था ना 100 और 150 वर्ड्स होना चाहिए, ऐसा नहीं. ठीक है. अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 लाइंस जो हम लिखेंगे, it will cover 100 to 150 words. Okay. When you are beginning your speech, ठीक है. मराठी में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, isn't it? It is our country's language. और हिंदी अगर तुमको समझ में आ रही हो तो आई डोंट थिंक उससे अच्छा कोई और चीज हो सकता है. ऑफ कोर्स इंग्लिश में भी फोकस करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब तुम पेपर सॉल्व करोगे तुमको वो पेपर इंग्लिश में ही लिखना है. ओके. सो हिंदी और इंग्लिश मैं ये 2 लैंग्वेजेस का यूज करूंगी एंड आई सर्टेनली होप कि मैं तुम्हारे डाउट्स पूरे क्लियर कर सकती हूँ. ओके. एंड आई एम श्योर बेटा जितने लोग यहाँ कमेंट कर रहे हैं जिनको मराठी आता है उनको हिंदी भी जरूर आती होंगी, isn't it? वो फर्स्ट लैंग्वेज हमारी होती है मोस्टली. ओके. सो यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर दैट. ऑलराइट. नाउ जब हम स्पीच स्टार्ट करते हैं you have to always begin with a proper salutation. Okay. Salutation जो हम address करेंगे ये speech. So it will be like, honorable judges, president, principals, and my dear friends, good morning to one and all. Okay. Provide a suitable introduction so that you can attract the attention of the audience. तो speech में जब हमने salutation लिख दिया है, better to start with a rhetorical question. Rhetorical question मतलब एक क्वेश्चन जिसका हमको उत्तर नहीं चाहिए, लेकिन हम हमारा पॉइंट बहुत एम्फसाइज करके बताने की कोशिश कर रहे हैं. हम फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे, अगर एनवायरमेंट के ऊपर स्पीच है, फर्स्ट सेंटेंस हमारा हो सकता है आफ्टर सैल्यूटेशन, डोंट यू थिंक वी डिजर्व टू ब्रीथ फ्रेश एयर, इजंट इट? सो इमीडिएटली हमने क्या किया, वैल्यूअर का अटेंशन हमारी तरफ ड्रॉ किया है, हमारे आंसर की तरफ ड्रॉ किया है. उसके बाद जब तुमको एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देना होगा जिसमें तुम हाईलाइट करोगे कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी समस्या है जिसके बारे में तुम बताना चाहते हो. व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इज अंडर डिस्कशन. ओके. सपोजिंग इट इज ऑन एनवायरमेंट, सपोजिंग इट इज ऑन क्रुएल्टी टू एनिमल्स or some other topic, you need to focus on that particular part. After you finish with the introduction, you come to the main body. Your main body of the speech will have to mention the topic in detail. Okay. क्या problems है related to environment? What are we seeing happening to our environment recently? अगर तुम्हारे पास कोई statistical data है, for example, 1 million trees are being cut every day. We are thereby destroying our planet. ऐसा हम अगर बोलेंगे, ओके, तो ऑटोमेटिकली जो स्टैटिस्टिकल डेटा हम दे रहे हैं, ओके, वो एक्यूरेट होना चाहिए. द फिगर शुड बी करेक्ट. कोई मन का हम स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं डाल सकते. ओके. प्लस हमने जब प्रॉब्लम रेज किया है उसका सोल्यूशन भी हमको बताना है. ओके. व्हाटएवर इज द प्रॉब्लम दैट इज अंडर डिस्कशन, उसके लिए क्या रेमेडीज है एज अ सिटीजन ऑफ दिस सोसाइटी, हम क्या कर सकते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारे लेवल में. व्हाट कैन वी डू, इजंट इट? हम बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम.
So when we say charity begins at home, how, as an individual, what will be our contribution in order to bring about an overall change in the bigger picture? काफी proverbs और quotations भी तुम use कर सकते हो by great leaders, by great politicians, by great thinkers. For example, इससे भी तुमको जो वो additional half mark है वो valuer जरूर देगा. For example, be the change you want to see in the world. ये बोलेंगे, महात्मा गांधी ने ये बोला है कि जो चेंज हम दुनिया में देखना चाहते हैं वो चेंज लाने के लिए तुम एज एन इंडिविजुअल क्या करोगे. ठीक है. सो डोंट जस्ट कीप प्रीचिंग, बट यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू preach. When you are concluding your speech, okay, you have to make a powerful statement that will leave the audience thinking. If we don't act now, this world is going to come to an end. So wake up, everybody. Okay, get up. This is the time for you to move. Okay, this is the time for you to do something for your society. जब तुम ऐसे बोलेंगे तो लोगों को सोचने में हम मजबूर कर देते हैं कि हाँ, this is the time when really some action needs to be done. Okay, and of course, जैसे तुमने beginning में salutation लिखा है speech के, तुम एक thank you से end करोगे. Thank you everyone for giving me this wonderful opportunity of presenting or placing my two words in front of you. I also thank everyone to give me a patient hearing. ठीक है, इस तरीके से तुमने पूरे पॉइंट्स प्रॉपर्ली कवर किया. ट्रस्ट मी, 3.5 out of 4 तुमको डेफिनेटली मिलेगा. लेक्चर कभी लक्ष्य द्या. ओके ओके, अगेन प्लीज गिव मी एन एग्जाम्पल मैम. Yes, whoever this is, Ali Brand. All right, I will be giving you an example. Okay, now this is the example that is in front of you. इसका तुम screenshot ले सकते हो students, because we have very short time. So I will not be reading the entire example. ये stop cruelty to animals and birds के ऊपर मैंने speech तैयार किया है. इसका तुम, I have one question. Okay, बताइए किसको क्या क्वेश्चन है. माधुरी, yes, you can ask me your question, माधुरी. I am waiting for your question. माधुरी, I am waiting for your question. आपको क्या पूछना है? Yeah, Madhuri, you have again texted the same thing, but you have to tell me what is the question you want me to answer. तुमको क्या, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, आप मुझे वो पूछो. हाँ, फिल्म रिव्यू गाइडेंस भी मैं अभी बताने वाली हूँ. हाउ मेनी लाइन्स? ओके माधुरी, बिगनिंग ऑफ द लेक्चर में ही मैंने ओरिएंटेशन में बताया है, अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 लाइन्स की तुम्हारी स्पीच होनी चाहिए. ओके, जिसमें एक बिगनिंग रहेगा. ओके, सैल्यूटेशन होता है, फिर स्पीच को तुम इंट्रोड्यूस करते हो. बॉडी, द मेन कंटेंट ऑफ द स्पीच हैज टू बी गिवन, कंक्लूजन हैज टू बी गिवन, एंड थैंकिंग यू इन द एंड. Okay, so overall 18 to 20 lines में तुम अपना speech complete करोगे. Okay, all right. Now with your permission, let me move ahead. Marking scheme is in this order. Logical sequence of ideas will carry 2 marks. All right. Then introduction, logical sequence means पहले salutation आया, introduction आया, body आया. Body, that is the main topic you have covered. You have given your suggestions to the problem, solutions, conclusion, and then thanking you. All right. ये order तुमने maintain किया. Giving the introduction and conclusion, देखो इतना important है कि अलग से उसको 1 mark allot किया गया है. Yes, Sayyid, ask me your question. Speech में कितने paragraph लिखना है या फिर एक ही paragraph में लिखना है? You can write the speech in 2 or 3 paragraphs. That is also okay, and you can write your entire speech in 1 paragraph. That is also fine, as long as you are maintaining the order. Okay, sequence maintain karna zaruri hai. What can we add? Some sentences or points in common.
See, there cannot be the common points, of course, will be the introduction part and the conclusion part. Okay, introduction, a very warm good morning to one and all, or you can say a very warm good morning, respected principal, teachers, and my dear friends. I, so and so, stand before you to speak on the topic dash dash dash. Okay, ये एक common line हम mention कर सकते हैं. Then conclusion में एंड में जो थैंक यू बोलेंगे वो भी कॉमन रहेगा है. आई थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी अ पेशेंट लिसनिंग. दीज आर अ फ्यू कॉमन लाइन्स दैट यू कैन कवर. टीचर तुमचा आवाज खूप जास्त आहे. ओके, यू वॉन्ट मी टू रिड्यूस माय वॉइस. एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू स्पीक अ लिटिल लाउडर सो दैट आई एम ऑडिबल टू एवरीवन. ओके मैम, स्पीच कौन से टेंस में लिखे? ओके, you have to make use of the present tense when you're writing your speech, because when you write your speech, students, you are addressing an audience. ठीक है, तो जब तुम ऑडियंस को, भले ही तुम वो लिख रहे हो, लेकिन तुम ऑडियंस को एड्रेस करते हो, so it has to be in the present tense. All right, then in which tense? Okay, कोणत्या विषयाला? मी पण. Ma'am, how much time do we have to give to speech writing? Tentatively 10 minutes is sufficient for you, in which you can easily complete your speech. Okay, all right. Now, logical sequence I have already explained. Okay, yes, all of you, yeah, between 100 and 150 words. When I start writing a speech, it goes beyond. No, Manju, you have to take care of the word limit, because if you spend too much time in giving too much time to one particular activity, you will realize that you have lesser time for covering up your other activities. तो ये पेपर को कैसे प्रेजेंट करना, कैसे टाइम को एडजस्ट करना, ये भी आई थिंक आगे तुमको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सर बताएंगे. ओके, all right. So without much ado, I have to cover the other topics also. Let us move forward to film review. Oh, this is one of my favorite topics, and I always tell my students, जब अगर फिल्म रिव्यू पूछा जाए तो बाकी एक्टिविटी छोड़ो और पहले फिल्म रिव्यू सॉल्व करो, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मूवी देखी नहीं हो, पिक्चर्स देखे नहीं हो, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई एक मूवी बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई हो. We all are having some movie which is very close to our heart, isn't it? एक ना एक पिक्चर तो ऐसे जरूर है जो हमने देखा है, जो हमने पसंद किया है, लेकिन हम पिक्चर देखने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, we get fully entertained, we come back and we totally forget about it. आज तुमको ये अपॉर्चुनिटी दी है बोर्ड ने कि तुमको उस पिक्चर का रिव्यू लिखने को बोला गया है. फर्स्ट थिंग आई विल टेल माय स्टूडेंट्स कि जब फिल्म रिव्यू लिखने का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है. ओके, यू कैन यूज एनी मेथड यू वांट, एनी पॉइंट्स टू कवर दैट यू वांट व्हेन यू आर राइटिंग अ फिल्म रिव्यू. लेकिन सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो हमको डेफिनेटली पर्सपेक्टिव में रखना है और ये फिल्म का रिव्यू लिखना है. Okay, so when you are writing a film review, what are the points that have to be borne in mind? सबसे पहले इंट्रोडक्शन. ये बताने के पहले स्टूडेंट्स मुझे ये बताने दो तुमको कि तुम वही पिक्चर की रिव्यू लिखना. ओके, हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी कोई भी चलेगा बेटा, इट डज नॉट मैटर. स्पाइडरमैन की रिव्यू भी तुम दे सकते हो, सुपरमैन की दे सकते हो, शोले पिक्चर की भी दे सकते हो. ओके, पद्मावत की दे सकते हो, दबंग की दे सकते हो, दंगल की दे सकते हो, लेकिन उसी पिक्चर की रिव्यू लिखो जो मूवी तुमने देखी है. ओके, जो ना देखी हो उसको लिखने की कोशिश मत करो, क्योंकि फिर तुमको काफी सारी चीजें रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, जो मुश्किल है. जो पिक्चर हमने देखा है उसके बारे में लिखने में हमको कभी दिक्कत नहीं जाती है. ओके, नाउ इंट्रोडक्शन में हमको दीज पॉइंट्स इंक्लूड दैट रिव्यू मैसेज. Can we write film review of other countries movie from any other movie? Yes, that is what I'm telling you. बेटे एक ही क्वेश्चन तुम लोग बार बार पूछ रहे हो, मैम बुक या मैगजीन रिव्यू भी आ सकता है ना? Yes, लक्ष्मी, I will be going to the book review. मेरे को थोड़ा सा be a little patient,
थोड़े से सवाल कम करो, क्योंकि फिर मैं चैट देख रही हूं तो यहाँ पे मेरा लिंक ब्रेक हो रहा है, ठीक है? सो क्विकली लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन द मूवी रिव्यू। इंट्रोडक्शन में मूवी की बेसिक इंफॉर्मेशन हमको देनी होगी। इसमें क्या क्या रहेगा? मूवी का नाम, डायरेक्टर का नाम तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रोड्यूसर का नाम ध्यान में रखना है, मेजर एक्टर्स कौन है उस पिक्चर के, और वो मूवी कौन से साल में रिलीज हुई है। ये सब चीजें हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। उसके बाद ये मूवी कौन से जॉनर को बिलोंग करती है, टू विच जॉनर डज इट बिलोंग। यू हैव स्टडीड जॉनर्स, नॉवेल एंड ड्रामा इन योर 11th and 12th standard. So genre means nothing but which type of a movie you are talking about. Is it science fiction? Is it a historical movie? Is it a horror movie? Or is it a romance? Comedy? जो भी मूवी तुम लिखोगे तुम बताओगे दिस इज सच एंड सच अ टाइप ऑफ मूवी। ये आ गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ वी कम टू द प्लॉट। नाउ प्लॉट में ब्रीफली इन शॉर्ट तुमको बताना है उसका स्टोरी का प्लॉट क्या है। ओके वो स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। ओके उसमें मेजर कैरेक्टर के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। ओके ये सब चीजें जब हम बता रहे हैं, एक चीज याद में रखना कि कभी उस मूवी की एंडिंग हमको नहीं बतानी है, क्लाइमैक्स नहीं लिखना है, क्योंकि ये रिव्यू इसलिए लिखा जा रहा है सो दैट अदर पीपल विल गो एंड वॉच द मूवी आफ्टर ही और शी हैज रेड द रिव्यू। ओके तो इसलिए कभी कंक्लूजन, कभी एंड पिक्चर का तुम रिव्यू में नहीं लिखोगे। जब एंड नहीं लिखते हैं तो रीडर्स की क्यूरियोसिटी, उनकी उत्सुकता और ज्यादा बढ़ जाती है एंड दे से यार ये मूवी तो बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करती, हमको जाके ये पिक्चर देखना है। ओके दैट इज हाउ यू विल राइट योर प्लॉट। नाउ मूविंग ऑन टू द एनालिसिस। यहाँ पे तुमको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है वो मूवी के सिनेमाटोग्राफी के बारे में, उसकी लाइटिंग इफेक्ट्स क्या है। ब्रेक आलेला कि तुम्हारा we don't have to give spoilers. Yeah, correct. Spoilers तुमको नहीं देना है. You don't have to open up the suspense of the movie. I already told you that. Now, when we deal with the analysis part, यहाँ पे lighting effects क्या थे मूवी के, sound and music कौन सा है, who is the music composer, who has, how is the direction of the movie, is the story very well connected, कैरेक्टर्स का कैरेक्टराइजेशन कैसे दिया गया है, हर कैरेक्टर को फाइनली डिफाइन किया गया है कि नहीं, तुमको कौन से डायलॉग्स बहुत इंप्रेसिव लगे। ओके और मूवी की सेटिंग क्या थी, सीनिक ब्यूटी क्या है, ये पूरा तुम एनालिसिस में लिखोगे। After you do that, you come to the conclusion, that is the evaluation. Here, you will need to give your general thoughts and impression about the movie. How did you find the movie? तुम्हारे personal views तुम यहाँ पर बताओगे. How did you feel after coming out of the movie? Was the major theme of the movie well covered? Was the movie focused properly? Did it inspire you? Did it touch you? Did it really make you laugh? जैसा तुमने सोचा था. Okay? ये सब चीजें तुम अपने conclusion में mention करोगे. And you may conclude by giving it stars. I rate the movie, giving it 5 stars. It is a must watch. ऐसा तुम बोलेंगे तो आगे वाला definitely वो picture देखने जाएगा. You can even give it a 1 star and say the movie is not worth watching. तुम ये movie बिल्कुल skip करो क्योंकि ये बहुत boring है. आधा interval के बाद I went off to sleep. You can give this kind of a conclusion as well. So overall, I will rate the movie 2 stars out of 5. You do that and ultimately you conclude your movie review. Okay. Now, marking scheme is in this order. Song review दिया तुम्हारा yeah, of course. किसने बोला ये? Vishal, you have to give a review about the songs also. Did you find the songs very interesting? Did you like the way the music has been composed? ये सब चीजें technical analysis में लिखेंगे तो तुमको extra half marks सब जगह मिलेंगे. Okay, marking scheme, presentation of the theme and storyline.
अगर तुमने थीम और स्टोरी लाइन अप्रोप्रिएटली लिखा है 2 मार्क्स। वो मूवी में नॉवल क्या है, व्हाट इज न्यू, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ पिक्चर के क्या है, ये कवर किया, तुमको 1 मार्क मिलेगा। ओवरऑल प्रेजेंटेशन, पूरे 4 पॉइंट्स तुमको कवर करने थे, अगर तुमने वो सिस्टमैटिकली प्रॉपर ऑर्डर, कीपिंग इन माइंड द प्रॉपर यूज ऑफ लैंग्वेज without making any grammatical errors in the way you have spelled words, if all this is followed properly, definitely you can score complete marks. This is how the activity is going to be based. Ma'am, कितनी मार्क्स ला आए फिल्म रिव्यू? 4 मार्क्स। बेटे एक चीज याद रखो स्टूडेंट्स, राइटिंग स्किल्स का टोटल राइटिंग स्किल्स तुमको 4 अटेम्प्ट करने होंगे, ए बी सी डी, और हर स्किल के लिए 4 मार्क्स है। ओके, एवरी स्किल, हर स्किल में 3 चॉइसेस है, 3 में से तुमको एक ही अटेम्प्ट करना है। सो एवरी राइटिंग स्किल विल गिव यू 4 मार्क्स। ओके, सॉन्ग लिहिल तरी चालेल का, नो, कंप्लीट सॉन्ग्स तुमको नहीं लिखना है, तुमको बताना है हाउ वर द सॉन्ग्स। ओके, वर दे वेरी इंटरेस्टिंग, वर दे वेरी कैची, वर दे वेरी म्यूजिकल? ओके, एंड you felt like singing that song over and over again after listening to them, something like that. Okay, now this is how the activity based question will be framed. एक रिव्यू पूछा जाएगा, और देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और बेस्ट पॉइंट ये है कि पिक्चर का नाम नहीं दिया है, तो तुमने कोई भी एक मूवी अच्छे से प्रिपेयर कर ली है, डेफिनेटली यू कैन राइट इट, तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर परफेक्ट रहेगा और 100% करेक्ट रहेगा। अभी ये पॉइंट्स ही जनरली दिए रहेंगे, इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स के बारे में तुमको लिखना है। सो मैम एट लास्ट रिव्यू में ट्विस्ट ज्यादा रखे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यस अभिनव, यू हैव टू कीप द ऑडियंस गेसिंग। ओके, कि या एंड में क्या हुआ। ओके, हीरो और हीरोइन मिले कि नहीं मिले, विलन ने हीरो को मार डाला कि नहीं मारा, वैसे हमको बेसिकली पता होता है, हिंदी मूवीज में तो इट्स ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, जैसे सर ने अभी बोला है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर होता ही है, isn't it? But nevertheless, आजकल मूवीज आर मेड इन डिफरेंट क्रिएटिव मैनर एज वेल। ओके, जहां पे हीरो की भी डेथ होते हुए हमको दिखाई देती है। ओके, नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट, I guess somebody's mobile phone is ringing in the background. Please switch it off. Okay. About the story theme of the film, special features of the film, name of the main actors and supporting actors, why did you like or dislike the film, music, dance, song, action, direction, would you recommend your friends to watch the film and why? Okay. इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स तुमको कवर करने। हाँ, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं गणेश, 1 मिनट होल्ड ऑन। ओके, यहाँ पे मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी का एग्जाम्पल दिया है, शोले। ओके, हम सब ने ये, भले ही तुम लोग न्यू जनरेशन के लोग हो और ये पिक्चर शायद देखी नहीं देखी, आई डोंट नो, लेकिन नहीं देखी है तो जरूर देखना एग्जाम हो जाने के बाद। ओके, सो शोले इज अ क्लासिक 1975 बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। मेन एक्टर्स के नाम मैंने बताया है, और मूवी में उनका क्या नाम है वो बताया है। इस मूवी का हु इज द राइटर ऑफ दिस मूवी, सलीम जावेद। ओके, सलीम जावेद ने और कौन से हिट बनाए हैं, दीवार, मिस्टर इंडिया, जंजीर। ओके, शोले को प्रोड्यूस किसने किया है, डायरेक्ट किसने किया है, जीपी सिप्पी एंड रमेश सिप्पी। इसके म्यूजिक मेस्ट्रो कौन है, आर.डी. बर्मन जी। इसके गाने की सुपर हिट है, ओके, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, महबूबा महबूबा, होली के दिन, है ना। ये गाने आज तक के जब रेडियो पे बजते हैं, एफएम पे आते हैं, तो इट मेक्स अस फील लाइक डांसिंग, isn't it? How the story is interwoven beautifully. You see, उसमें there is one basic character, okay, who wants to take revenge on a dacoit, and he takes the help of 2 con men, that is Amitabh Bachchan and Dharmendra. हमको पता है वीरू और जय की जोड़ी, है ना। And of course, this particular movie also has some good laughs, which is shown through Surma Bhopali's impeccable Bhopali accent. Okay, humor, action, and melodrama. It is a mixture of everything. Okay, many of the dialogues of this movie are being used even today. हम में से कौन है जिसने ये नहीं सुना, जो what is that, जो डर गया समझो वो मर गया, isn't it?
कितना मोटिवेटिंग है, आज भी हम वो यूज करते हैं. और दिस इज द मूवी थ्रू विच अमजद खान, हु वाज अ विलन, who acted in the role of Gabbar Singh, shot to fame. इसको पैराग्राफ में डिवाइड करना है बेटा, वो 4 पॉइंट्स दिए रहेंगे. रिव्यू पॉइंट्स में लिखते क्या, पैराग्राफ में. हाँ, ये 4 पॉइंट्स कवर करने हैं, तो एवरी पॉइंट को तुमको एक्सप्लेन करना रहेगा. ओके, सो 4 शॉर्ट पैराग्राफ्स में तुमको लिखना है. तू मुंबई चे आहे मग. Okay, please no personal discussions. Once again, it's a request to you, okay, because I will waste time in reading it. Okay, to write to point wise or paragraph wise, you have to first mention the point. Okay, जो point पूछा है, all right, और फिर उस point को तुमको elaborate करके लिखना है. Now, where is the movie shot? It was shot in Ramnagaram near Bangalore. Okay, this is the way you will explain. And in the end, of course, I told you, how will you rate the movie? I will give it 5 stars out of 5. It is a total, complete entertainment. All movie buffs out there, do not miss it. मैं बोलूंगी. And for those who plan on not watching, तेरा क्या होगा कालिया, है ना? That is the way you will end it. So it will make the viewer smile as well. और उसको पता रहेगा टीचर को, जो तुम्हारे पेपर वैल्यू कर रहा है, ये स्टूडेंट ने जेन्युइनली एफर्ट्स ली है, मेहनत की है अपनी फिल्म रिव्यू लिखने के लिए. चलो, ये बच्चे को मैं फुल मार्क्स दे देती हूं. तो इस तरीके से तुमको अपनी तरफ से अपना फिल्म रिव्यू इतना इंटरेस्टिंग बनाना है कि you force the teacher, you force the valuer to give you the complete 4 marks. Okay, now book review students, इसको हम बहुत ही ब्रीफली करेंगे क्योंकि कंपेयरिंग का क्वेश्चन एक्टिविटी 4 का मुझे थोड़ा डिटेल में करना है. बुक रिव्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट है. अगर तुमको फिल्म रिव्यू के बदले बुक रिव्यू आ गया, तो बुक रिव्यू हम कैसे लिख, कैन वी राइट दिस फिल्म रिव्यू इन आवर ओन वर्ड्स आल्सो? Of course you can write. You have to write the film review in your own words. How many points in review? I've already told you 4 points have to be covered in the review. Film topic will not be given in the exam. No, Charini, you people are not paying attention. मैंने बता चुकी हूं कि तुमको नहीं दिया जाएगा. कौन से फिल्म का लिखना है? नहीं, तुम कोई भी मूवी के बारे में लिख सकते हो. सेम थिंग, मैम हमें चाहिए वो मूवी का रिव्यू राइट कर सकते हैं क्या? हाँ, तुमको जो भी मूवी का रिव्यू, अभी जैसे मैंने शोले बताई हूं तुमको, ये मूवी का रिव्यू भी तुम लिख सकते हो. लेटर ऑन हम हमारे चैनल पे ये शेयर करेंगे ताकि तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सको. टीचर रोज, I don't know, film topic will not be given. No, film topic will not be given in the exam. Okay, you have to prepare one film which you really like. All right, now I'm not going to answer any more questions till we move ahead. अभी फिल्म रिव्यू के बदले अगर बुक रिव्यू आ गया तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है. ओके, बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि बुक रिव्यू लिखने के लिए बेटा, तुमने अगर कोई नॉवेल पढ़ी है जो तुमको बहुत पसंद आई हो, ओके, वो नॉवेल के बारे में तुमको लिखना होता है. उसमें क्या पॉइंट्स कवर करेंगे गुड बुक रिव्यू में? यू हैव टू फोकस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द टॉपिक. जो कैरेक्टर्स दिए हैं वो नॉवेल में, जिसके बारे में तुम बुक रिव्यू में लिख रहे हो, कैरेक्टर्स को कैसे एक्सप्लेन किया है, स्टोरी लाइन उसकी क्या है, वो ऑथर ने बुक लिखने के पहले प्रॉपर रिसर्च किया है कि नहीं. ओके, ये सब चीजें. यू डोंट हैव टू बी जजमेंटल. वो ऑथर के बारे में बुक तो रिव्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ऑथर ने जो बुक लिखा है उसके बारे में. मैम, बुक रिव्यू और फिल्म रिव्यू दोनों पूछे जाते हैं क्या, या दोनों में से एक ही पूछा जाता है? नहीं, अगेन लेट मी क्लैरिफाई, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा. सो यू हैव टू कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड प्रे टू गॉड ऑलमाइटी हमको फिल्म रिव्यू पूछे. ओके, मैं अपने बच्चों को यही बोलती हूँ. बुक रिव्यू आता है तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है लिखने के लिए. अगर तुम वोरेशियस रीडर हो, जो बहुत रीड करते हो, तो इट्स अ केक वॉक, तुम्हारे लिए बहुत इजी है बुक रिव्यू लिखना. लेकिन इफ यू आर नॉट रीडिंग, बिकॉज आई नो आजकल के बच्चे, यू आर मोर ऑन सोशल मीडिया, यू डोंट बिलीव इन रीडिंग मेनी बुक्स, सो इसलिए बुक रीडिंग इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. Now, what are the common features of a book review?
It focuses on the strengths and weaknesses of the book. जो भी तुम लिख रहे हो, बता रहे हो उस बुक के बारे में, तुमको एविडेंसेस देने पड़ेंगे, and you will have to draw a conclusion saying something interesting about the book. Do you find that the book is good to read or not? You have to give your personal opinion as well. All this, the book review is going to be very similar to the film review. Only यहाँ पे तुमको एक बुक पढ़ी होनी चाहिए और उसके बारे में तुम बताओगे. पॉइंट्स मोर और लेस सेम ही रहते हैं जो तुम्हारे फिल्म रिव्यू के रहेंगे. ओके, नाउ हियर प्रेजेंटेशन ऑफ द थीम एंड स्टोरी लाइन जो तुमको देना जरूरी है, उसके लिए तुमको 2 मार्क्स मिलेंगे. हाँ, एग्जाम्पल भी मैं दे रही हूँ बुक रिव्यू का. ज्योतिराम, जस्ट वेट. विंग्स ऑफ फायर का बुक रिव्यू लिख. ऑफ कोर्स दैट इज अ ब्यूटिफुल बुक that has been written by our late president Abdul Kalam ji. अगर तुमने Wings of Fire लिखा है, oh, I would definitely recommend for you to write about that book. Okay, technical and novel aspect तुम cover करोगे 1 mark के लिए. Overall presentation के का 1 mark. इस तरीके से 4 marks होंगे. अब देखिए बुक रिव्यू के लिए name of the characters रहेगा, story, theme line, why do you like or dislike the book, special features or novelties of the book, and should others read the book? Do you recommend other of your friends to read the book? इसमें से कोई भी 4 points तुमको cover करना है. Ma'am, points are our own or given? No dear, the points, Deepak, the points will be given in the question paper. वही points को focus करके तुमको अपना book review या film review तैयार करना होगा. Okay, all right, ma'am. बेटा पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने का. ऑल राइट, नो आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस हियर. टॉपिक दिला जातो कि कोणता फिल्म रिव्यू आहे. नहीं, अगेन बेटे यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन. टॉपिक नहीं दिया रहेगा, तुमको अपने मन से कोई भी बुक का रिव्यू या कोई भी फिल्म की रिव्यू एक एक तैयार करके चले जाओ. यहाँ पे मैंने एक एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन यहाँ पे मैंने प्रिपेयर किया है. स्टूडेंट्स देखो, नेम ऑफ द कैरेक्टर्स मैंने मेंशन किया है, अबाउट द स्टोरी मैंने बताई हूं. ओके, देन आई हैव एक्सप्लेन्ड द एनालिसिस एंड नॉवल आइडिया एंड माय ओपिनियन अबाउट द बुक. प्लीज स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज आई एम रियली रनिंग आउट ऑफ टाइम और मुझे पूरा कंपेयरिंग की एक और टॉपिक तुम लोगों के साथ कवर करनी है. ओके, आई विल जस्ट आस्क यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फिल्म रुचि. Okay, I've given you the 1 minute required. Now let me move quickly forward to the art of comparing, a topic that is very close to my heart because I do this on and off in my college. What do we mean by comparing, students? Comparing वो art होती है जब हमको कोई प्रोग्राम कंपेयर करना होता है, एंकर करना होता है, कोई प्रोग्राम कंडक्ट करना होता है, टेलीविजन पे, रेडियो पे, स्टेज पे. ओके, कंपेरर जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है जो एक पूरे प्रोग्राम को कनेक्टेड रखता है, लोगों का इंटरेस्ट बना के रखता है, ऑडियंस को अपने तरफ आकर्षित करके रखता है. वो ये भी देखता है कि प्रोग्राम पूरा स्मूथली कैसे चल रहा है. ओके, all these things are taken into consideration. This is the role of an anchor. ओके, ये एंकर का रोल होता है. एवरी पर्सन जब स्पीच दे रहा है, एक परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके बाद उस चीज को अप्रिशिएट करना, दैट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस XYZ. ओके, आई आस्क एवरीवन टू ब्रिंग योर हैंड्स टुगेदर एंड गिव देम अ बिग एप्लॉज. ये सब सेंटेंसेस भी हमको ऐड करना होता है. मैं अच्छे से बताऊंगी, मेरे पास 5 मिनट और है. मैं आराम तुम लोगों को बताती हूँ किस तरीके से हमको कंपेयरिंग करनी होती है. नाउ points that have to be mentioned when you are preparing the script for comparing an event. Okay, now remember, ये comparing जो तुम करोगे, ये question attempt करोगे, ये points हमको उसमें cover करने होते हैं. Again, हो सकता है question paper पे mention भी करके आए कौन से 4 points है जो तुमको cover करने हैं. वो दिया है तो nothing like it, you will have to compare those 4 lines only. Okay, all right. Now, first and foremost,
it has to be, your comparing has to be, you have to have an impressive introduction. Okay, try to begin. मैं अपना comparing हमेशा quotation से शुरू करती हूँ. After that, you will have to welcome everybody, welcome the guests, lighting of the lamp, जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में होता ही है. Okay, then opening remarks and welcome address can be given by the head of the institute or organization. Sometimes the person who is comparing can also be asked to do this. Okay, then introduction and welcome of the chief guest. हमने जो chief guest को invite किया है उसका proper introduction और welcome हमको करना होता है. फिर program क्या है? Supposing it is felicitation of somebody. Now let us begin with the felicitation of XYZ. For this, I invite our president and principal to felicitate our guest by offering a memento and a bouquet. Okay, that is how you will write in your script. मेरे पास script तैयार है, don't worry, मैं तुमको दिखाऊंगी. Okay, now after that, proper summing up of the program. How will you conclude the program? With a vote of thanks, उसमें आएगा definitely. And हम लोग generally हमारे कॉलेज में पसायदान रिसाइट करते हैं या नेशनल एंथम से हमारा प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं. नाउ आई विल शो यू हाउ द स्क्रिप्ट हैज टू बी रिटन. दिस इज द क्वेश्चन. अभी रिसेंटली ये प्रोग्राम हमारे कॉलेज में हुआ था. इमेजिन दैट यू आर अ कंपेयर फॉर फेलिसिटेशन सेरेमनी ऑफ पद्मश्री डॉक्टर धनंजय दिवाकर सखदेव. ये हमारे कॉलेज के एलुमनस थे, हमारे कॉलेज से पढ़े हुए थे. तो उनके लिए हमने जो स्क्रिप्ट तैयार की, इंट्रोडक्शन एंड वेलकम, lighting of lamp, welcome address, introduction of chief guest, felicitation of Padma Shri Dr. Dhananjay Sakhdev, chief guest की speech, presidential address, vote of thanks and पसायदा. इसमें से कोई 4 top points तुमको cover करने हैं. All right. I told you I always begin with the quotation. Please screenshot ले लीजिए students. After the quotation, you will come down to the introduction and welcome. उसमें हमेशा तुम ऐसे लिखोगे, a very warm good morning respected president of Dharmapeth Education Society, etc., etc. With a deep sense of pride and humbleness, I, Mrs. Sujata Ali, welcome you all for the felicitation ceremony of so and so, who is an alumni of this great institute, Dharmapeth MPDO Memorial Science College, Nagpur. मेरा introduction हो गया. Lighting of the lamp के लिए 2-3 sentences लिखने रहेंगे. All auspicious occasions commence with the lighting of the lamp at the goddess of all, Ma Saraswati, who we regard as an embodiment of knowledge and wisdom. To make this event a truly blessed one, I earnestly request our dignitaries to kindly come forward to light the lamp and offer flowers at the altar of Ma Saraswati. ये बोलेंगे, thank you all. Lighting of the lamp तुमने cover कर लिया. Welcome address and opening remarks. डिटेल में नहीं लिखना है, एक ही सेंटेंस लिखना पड़ेगा. May I now call upon our principal, Dr. Akhilesh Peshwe, to give the opening remarks and formally welcome and introduce the program. Thank you, sir. Introduction of the chief guest, थोड़े डिटेल में मैंने लिखा है. Okay. Again, मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्वामी विवेकानंदा के कोटेशन से स्टार्ट किया है. It is a privilege to serve mankind. क्योंकि ये इंसान जो पद्मश्री थे, ओके, जो पद्मश्री है, सॉरी, इन्होंने 40 इयर्स सर्विस दिया है वायनाड करके एक स्मॉल विलेज में. ओके, सो इसीलिए सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड. ऐसा कोटेशन मैंने लिया है स्वामी विवेकानंदा का. और फिर मैंने चीफ गेस्ट का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है. आफ्टर आई हैव इंट्रोड्यूस द चीफ गेस्ट, उनके फेलिसिटेशन के लिए मैंने बुलाया है हमारे प्रेसिडेंट को. May I now request our president and principal to felicitate our chief guest, so and so, by offering a memento, shawl, श्रीफल and a bouquet. Thank you, sirs. हो गया. Chief guest की speech. उसके बाद मैंने chief guest को invite किया in order to give his speech. उनकी speech हो जाने के बाद हमको 2-3 lines लिखने हैं. That was a truly remarkable and inspiring speech. It moved us greatly, and we were deeply touched and honored knowing that we have this golden opportunity of meeting you, sir, in person. Thank you, sir, once again. Okay, so this is how you will give your chief guest, the chief guest speech के बारे में उनका अपन ने thanks बोल दिया. Then president को invite करेंगे उनका presidential address के लिए. After that, vote of thanks के लिए we can call whosoever we want, and
Pasaidan, that is the conclusion. I now request so-and-so to please come forward for the Pasaidan or for reciting the national anthem. All are requested to stand while the Pasaidan is being recited. Okay, I declare the program is now concluded. Thank you all once again. This is the format in which you have to write your comparing. This is how you compare a program. All right. जब तुमने इस तरीके से आंसर अटेम्प्ट करोगे, trust me students, you will get the complete marks. Connecting events will give you 2 marks. Impressive introduction will give you 1 mark, and summing up will give you 1 mark. Total 4 marks in all. ठीक है, इस तरीके से तुमको ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को अटेम्प्ट करना है. So students, I seriously and sincerely hope that I have been able to do justice to the 3 topics that were given by me. I now hand over the mic to our resource persons. Thank you all. मैम स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए आपकी. Yes, sir. Good evening, one and all. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this special occasion. Friends, today we got a chance to listen to 2 great personalities, Mr. Tushar Chavan sir and Mrs. Sujata Ali ma'am. On behalf of gratitude to our honorable speaker of the first session, Mr. Tushar Chavan, from his busy schedule to grace the event, encouraging students with your words. Sir, your presentation was fantabulous, excellent, and live in the real sense. You considered the level of all students and explained the things in simple way. You made the session really interactive. Thank you, sir, for your efforts regarding today's topic. I like to express my sincere thanks to our honorable speaker of the second session, Mrs. Sujata Ali ma'am, for her thorough explanation of the topic and giving an excellent coverage to all the points. Madam, your presentation was perfect, superb, and informative one. You gave perfect and catchy examples to prove your points and clear almost all the doubts of students. There is no doubt that your precious guidance will be of great benefit to all the students of Maharashtra. Thanks a lot, madam. Once again, a big thank you to both of you for gracing us with your excellent and superb presentation. I am thankful to all our other eminent speakers, Mr. Anil Bagre sir, Mrs. Prabhaswani madam, Mr. Nadeem Khan sir, Dr. Suhasini Jadhav, Mr. Avinash Reddy sir, for their continuous support. A big thank you to Dr. Sanjay Gaikwad sir for providing a golden opportunity to students of Maharashtra by organizing such a wonderful event. My special thanks goes to Mr. Gajendra Bomble sir for his continuous technical support. I must thank to Mr. Sanju Pardesi, Dr. Ashish Devarkar, and Sanjeevani madam for working hard to make this event successful. And last but not least, I am thankful to all the students and teachers for your enthusiasm and active participation. Thank you everyone once again for making it a great success. Thank you. Over to you, Gaikwad sir. गजेंद्र सर स्टॉप करा. Oh my God.